Book Moments, Chapter 3, Iswaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. Before I proceed to the story, let me tell you something about famous personality R.K. Lakshman. He is a famous Indian cartoonist and illustrator. Now, I must tell you who is a cartoonist or illustrator. Illustrator is a person who draws or paints pictures for the books or newspapers or magazines. So R.K. Lakshman had been a very famous cartoonist of India, and he mostly worked for Indian local newspapers as well as magazines. In this story, Iswaran the storyteller, he tells the theme of the story is that everybody is has some of the fear in their hearts. Everybody accepts the presence of ghosts and the witches and the spirits, but nobody expresses them openly. Nobody accepts openly कि वो डरता है ghost से या witches से और spirit से. And the main motive of telling this to us by R.K. Lakshman is that if fear is there in our heart, we should know the proper cause of that fear. Okay, and because if we take some wrong decision, if we take any bold step in the cause of this fear, then it would be very harmful for our life. तो अगर हमारे दिल में कोई डर है, we should go to the root cause of that. What is the reason behind? Why are we afraid of that thing? We should see the cause behind every fear. So Iswaran, the storyteller, Iswaran is a character in the story, main character I must say, storyteller. He tells stories to his master, Mahendra. Now you see, one night Mahendra woke up from his deep and saw sleep and saw a dark, cloudy form in shape. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? So this story is about Mahendra, and he has got his cook. उसका एक cook है, एक servant है उसका. His name is Iswaran. And this Iswaran, whatever the story he has, simple story को भी वो बड़ा dramatic बताकर अपने master को महेंद्र को सुनाता है. So this is all about that. Now the story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. This story was told to a person Ganesh by a young man Mahendra by the name. He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. सो दिस महेंद्र ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म, और उस फर्म में जो है बहुत सारे सुपरवाइजर्स हायर पे लोग लेते थे फॉर कंस्ट्रक्शन साइट्स. कंस्ट्रक्शन साइट्स आर प्लेसेस ऑफ वर्क, जैसे फैक्ट्रीज, ब्रिजेस. अगर किसी को सुपरवाइज़र चाहिए होते थे तो वो उनकी फर्म से मिलते थे. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from from place to place every now and then, as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. So this his nature of the job was to shift from one place to another, जैसे भी ordered by his head office, whether it was a railway bridge construction site or it was a chemical plant or it was a mining area. So whatever it is, he had to move. He was a bachelor. Bachelor means unmarried. His needs were very simple, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of some stone quarry. कहते हैं वो अनमैरिड था, इसलिए उसकी नीड्स भी सिंपल थी, एंड ही वुड एडजस्ट इन ऑल सॉर्ट ऑफ ऑड कंडीशंस, इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट कंडीशंस. चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, इल इक्विप्ड मीन्स नॉट डेकोरेटेड प्रॉपरली सर्किट हाउस हो, या मेक शिफ्ट मीन्स टेम्पररी कैनवस टेंट हो इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. क्वेरी इज़ अ माइन के पास कोई भी टेंट लगा के वो अपना टाइम पास कर लिया करता था. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन. बट उसके पास एक असेट था, एक वैल्यूएबल चीज़ थी, वो था उसका कुक ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. He cooked for Mahendra, washed his clothes, chatted away with his master at night, and he would do all the work for him, whether to wash his clothes. He even talked to his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. अब ये जो ईश्वरन था, he was a master storyteller. He could weave out means make endless stories. उसके पास अनगिनत stories थी and anecdotes are again short stories on varied subjects. अलग अलग subjects पे हर तरह की story थी.
Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. एंड सेकेंड अमेजिंग कैपेसिटी उसके ईश्वरन की ये थी कि वो कहीं से भी वेजिटेबल्स या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स कुकिंग का सामान ले आता था फ्रॉम नो वेयर, पता भी नहीं चलता था फ्रॉम वेयर ही इज़ ब्रॉड, इवन फ्रॉम द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप। कोई भी ऐसी जगह पे अगर वो पोस्टेड होते थे जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वॉज वेरी डेजोलेट, बैरन है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई शॉप नहीं है, फिर भी वो अरेंज कर लिया था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और यही नहीं कि वो वेजिटेबल्स या सामान ले आता था कहीं से भी, ही वुड मिराकुलसली मीन्स स्ट्रेंजली, बड़े चमत्कारी तरीके से कंजर अप मीन्स डू समथिंग विद मैजिक, ऐसा लगता था मैजिक से वो बड़ी चमत्कारी तरीके से ही वुड मेक डिलीशियस डिशेस विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट। 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे वो अपने जिंक शीट, उनके जो शेल्टर होता था न्यू वर्क प्लेस पर, वो जिंक उसकी शीट उसके ऊपर डली हुई थी छत की जगह, तो वो वहाँ 1 घंटे के अंदर ही पहुँच बड़ी टेस्टी सब्जियाँ बना दिया करता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. So, as soon as Mahendra would leave for his job, पीछे ईश्वरन would do all these jobs. वो अपने आप टाइडी भी करता था शेड को, वॉश भी करता था क्लोथ्स, फिर नहाता था बड़े आराम से. Muttering a prayer. Muttering means speaking in low voices. And all the time he would mutter the prayer while bathing. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. और लंच टाइम के बाद वो खाकर सो जाया करता था. Dozing off means he would sleep. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. और जो बुक वो पढ़ता था वो कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर होता था. Thrillers are exciting novels. Okay, thriller, you remember, very very important name. Thrillers are exciting novels. बड़े जो बिकते हैं thrillers, okay, जो लोग पसंद करते हैं, और जो 100 pages के होते हैं, he was fond of reading them. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. और उस नॉवेल्स में जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होते थे, नैरेटिव होते थे, जो उसमें इतने बड़े बड़े टॉक्स होती थी, जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, दैट वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल. थ्रॉल मीन्स ही वुड बी इंचैंटेड बाई इट, ही वुड बी कैप्टिवेटेड बाई इट. CAPI कैप्टी, CAPTIVATED. वो कैप्टिवेट हो जाता था, उसकी तरफ बड़े ध्यान से सुनता था उनको. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और उसकी जो अपनी डिस्क्रिप्शंस होती थी जब वो महेंद्र को स्टोरीज सुनाता था, they were also influenced by the stories which he read. So this is all about in my first video. Thank you.